Good morning students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we'll start with the MCQ questions of audit chapter, audit subject. ठीक अच्छी audit subject रो important chapters रो important questions mark करची for this particular attempt. ठीक अच्छी you know audit carries 50 marks तो सेतिरे MCQs मध्य हैला सिंधिया का बहुत important काहे गेले मनर केस लो क्वेश्चन जदी किछि हैलानी तो MCQs will be of very help to you. ठीक अच्छी तो please pay attention. Most important questions मु बाहर करची like माने जोड़ा कैपेबल अच्छी रिपीट हेबा पई तो इवन यू कैन चेक एग्जामिनेशन हैला पर मध्ये तमे क्रॉस चेक करि परिबो एथिरु किछि ना किछि थिबो आगा जेमते हेले ओके दिस इज द पार्ट 1 तापर आउरी रिमेनिंग पार्ट्स तमर आसीबो ओके दीस आर फ्रॉम द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स माने कैटेगरी ए चैप्टर्स रु कहि परिबा ओके प्लीज पे अटेंशन what are the integral characteristics of financial statement system that make them relevant for decision making तो तुमको भी कहर अछि रीजन कोन पई सेटा हैला कहिगिरि इंटीग्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम दैट मेक देम रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग को पॉइंट लगी हैला मते को व्हाट मेड इट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग तुमको चारटा पर्सपेक्टिव रे गोटे क्वेश्चन देखिबार अछि तुम बुझि पारनी म कहूची माने ए जागो जो अछि दे आर वेरी रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग माने केत्ति की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमको मिलची केत्ति की ट्रूथफुलनेस अछि सेथरे केत्ति की फेयरनेस अछि माने केत्ति की अनबायस्ड हे के अछि ए जिंस को धरि के हम बेस्ट डिसीजन मेकिंग दा करि परबा इफ एट ऑल तांके पचाच हमको 2 C's की 3 C's of auditing तो completeness complexity से सब जिंस आसी पारे लेंथ एंड डिटेल जदी होची तो से पचरिबो कि जदी तुमको इंटीग्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम रेलेवेंट डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इन एन एंटिटी तो जदी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस रो जिंस आसुची तो आंसर विल बी ऑफ लेंथ एंड डिटेल आउ जदी ब्रांड नेम दा इंप्रूव करिया पे किछि गुटे जिंस आसुची तो पॉपुलैरिटी एंड रेलेवेंस आसीबो तो जेहेतु तुमको डिसीजन मेकिंग रो पॉइंट ता पचाची तो एडा हबो तमरो कोन डिसीजन मेकिंग ओके तो तुमको मु कहि दोछि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ आंसर्स और क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एमसीक्यू बुझि पालो एमती तुमको रीजन करियर अछि बे why might mere recording of transactions in accounting book not be sufficient for ensuring the quality of financial statements से कोची why mere recording of transactions in accounting book not be sufficient for ensuring the quality of financial statements but financial statements रो quality टा ensure करिया पई normally randomly in the record करिबा ठीक कोन पई नाही sufficient कोन पई नाही कोन पई नै तमे निजे देखो से कोची फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट इंपोर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एमती की नाही इंपोर्टेंट आगा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस की नाही सब हमको बहुत जिंस इनकर करिया पड़ची तापर से कहूची there is always a risk of unintentional mistakes or organized fraud unintentional mistakes माने जहां भी एरर्स हे पारे organized fraud माने कोन ना जो फ्रॉड ता इमिति से मेकअप करथि कि तमे चिन्नी पारियोनी माने देखिले मध्य you can't able to like detect this thing because financial statements are inherently accurate एडा भी नहीं तो से कहूची कि खाली नॉर्मली रिकॉर्ड कर देले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रो क्वालिटी टा बहुत हाई आली कहि कि तमे केमती कहि देबो ना केमती कहि देबो जेहेतु केमती कहि परिबनी नॉट बी सफिशिएंट केमती कहि परिबनी ना जेहेतु कोन सेथिरा अनइंटेंशनल मिस्टेक्स हमर बहुत किछि रहि जोची आ ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड रो मध्य चांसेस रहुची बुझि पाछो क्लियर प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इन रिलेशन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा ऑडिटिंग रो प्राइमरी पर्पस कोन फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा सहित कांगे ऑप्शन नंबर डी मते रीजन कयार अछि तमन इंटरैक्शन दरकार न तो पूरा मुआ का खाली कोथी को कोन पे डी प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इन रिलेशन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा बाकी तीनटा जो अछि मते कहलो क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रो ऑडिटिंग अंडर आसीयोगी को स्टेप अंडर पड़ो सेटा अकाउंटिंग प्रोसेस स्टेप अंडर पड़ोची
टैक्स कंप्लायंस टा कोन रेगुलेटरी पर्टिकुलर थिंग हां मैनेजमेंट एडवाइस टा डिसीजन मेकिंग ओके तो से को जे प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इन रिलेशन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा तो ता रिलेटेड रे कोन हला ना appraise financial accounting data independently appraise financial accounting data जदि से पचाते द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिटिंग विथ रिलेशन टू डिसीजन मेकिंग तो आंसर कोन ही थांदा हमरो मैनेजमेंट एडवाइस ही थांदा जदि से पचाते द टैक्स रेगुलेटरी तो टैक्स कंप्लायंस ही थांदा जदि से किछि भी माने प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा खाली पचातन तो क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही थांदा with माने रेफरेंस टू ऑडिटिंग जितलो को पचाची तो द आंसर विल बी डिफरेंट normally जतोड़ को पचाची the answer will be quite different ठीक अछि how has auditing evolved in today's business world how has auditing evolved in today's business world माने इनकर क्वेश्चंस रे कोन तुमको मोस्ट रेलेवेंट आंसर नबा पड़िबो ऑलमोस्ट सब जिंस गुडा को रेलेवेंट लाइक तो सीए को जे टुडेस बिजनेस वर्ल्ड रे ऑडिटिंग रे केमिति हमर इवॉल्व हेछि केमिति इंप्रूव हेगरी आसीछि तो बिकम लेस रेलेवेंट की नाही it's still relevant focus on traditional financial data nahi semti kichi nahi modern financial data bhi focus karchi audit plays a multifaceted dynamic role in various functional areas of organization बुझी पारलो माने तार रोल गुटे एते डायमेंशनल एते डायनामिक की सबु एरियाज ऑफ मैनेजमेंट माने सबु ऑर्गेनाइजेशन रो सबु फंक्शंस को से कवर करबो आ सबु फंक्शंस को से कोन करबो रेक्टिफाई करिया पे ट्राई करबो बुझी पारलो What does auditing extend its appraisal exercise beyond in today's business world? तमे से questions देखो से तेरा questions तमे केबे देखि नथबो ओके नॉर्मली mere questions auditing रे कोन अछि के देछि केते स्कोप रहउछि से सब जिंस रे bit questions we have already seen while studying the chapter but एजा होछि exam questions what does auditing extend its appraisal exercise beyond in today's business world से कोछि तारा जहा भी appraisal माने analysis part ता अछि सेडा किंदी से एक्सटेंड करिगी जाइछ ना बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हला माने तार अप्रेजल ता केते पर्यंत से स्कोप ता इंक्रीज करछि ना बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुझि पालो किछ डाउट्स अछि कोन हां नै तो कोन कहू माने बाहर कोन कहिले कोन हबो ना तो सही पडियो त माने की कोन लागि 6 7 8 अच्छा हाँ मिसिंग ओके नंबरिंग मिस्टेक छाड़ बढ़िया नहीं देल तो सडा आराम रही छे व्हाट मेजर इवेंट रिप्लेस्ड द कंपनीज एक्ट 1956 इन इंडिया ओके व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द टर्म ऑडिट हला एडा मध्ये तमे जानि परिबो सुनला लेजडा In the narrow perspective, what is the primary focus of auditing? Primary focus, hela primary focus कोन authentication of financial records. Authentication रे कोन चेक हबो हमें ऑलरेडी इथरे देखलु देखो फर्स्ट पॉइंट रे truthfulness, fairness केति कि सेटा डिसीजन मेकिंग पई बेनिफिशियल हबो हला कोन चेक होची truthfulness and fairness okay According to Professor Montgomery, what is auditing? एडा तमरे एग्जाम क्वेश्चन 2013 टाइम रो हला Professor Montgomery, what is auditing? A systematic examination of books and records. Okay? तमे देखि पारिबो एथिरे जदि तमनको बिल्कुल भी आईडिया नै तो एजा को जो अछि से जा कोन गुटे डेफिनेशन अंडर आछि कि ऑडिटिंग को डिफाइन करछि कि नहीं तो ऑब्वियसली एडा का ही थिबो तो कंफ्यूज हे पर नै नॉर्मली टिके कॉमन सेंस अप्लाई करिके मध्ये यू कैन आंसर द एमसीक्यू क्वेश्चंस व्हाट डज द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग एनकम्पास देखो प्राइमरी फोकस कोडा रहउची प्राइमरी फोकस हमरो वेरी गुड ऑथेंटिकेशन ऑफ ए रिजन जाको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आ एडी कोन ब्रॉडर एस्पेक्ट रे non-financial aspects हला according to SA 200 what is the essential feature of an audit मु कहिथिली तुमको से SA 200 SA 201 से जारो माने कोन अछि सेटा पचरिबो हेडिंग ला पचरिबो SA 200 रे कोन कहू से examination of any entity's financial information तो खाली एथरे जानिबो कि ए पाखरे लिखि दबो जति कि SA गुडा अछि हमर सब लिखि दबो फोको नंबर रे कोन कोन आसुछ
What is one of the primary purposes of auditing? निजे देखो एथरे कोन ऑडिटिंग सहित लिंक हे गिरी अछि. Primary purposes of auditing. हबनी जमा से जीवनी जा रेवेन्यू तार हाँ काम आगा नहीं सेडा क्रिएट करिवनी ऑथेंटिकेट माने करि पारिबो चेक करिवो वाउचिंग हैला नले एडा को पचारि परियो से वाउचिंग कहियो ओके तो प्राइमरी पर्पसेस व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स एन एनालिटिकल एंड क्रिटिकल रिव्यू एनालिटिकल एंड क्रिटिकल रिव्यू माने सजेशंस भी दबो आ कोन करिवो एनालिसिस भी करिवो को जिंस रे से करि परिबो फाइनेंशियल डाटा रे ही परिबो देखो एटा टिके इंपोर्टेंट क्वेश्चन दा फाइनेंशियल डाटा रे ही परिबोनी लीगल डॉक्यूमेंट्स रे ही परिबोनी माने तमे भाबो डिसीजन जदि तमको देबार अछि तो तमे कोन चेक करि कि दबो रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डा केमिति अछि आ सेडा को इंप्रूव करिया पे कोन करिया अछि सेडा ही परिबो नहल तो कोन एक्जिस्टिंग जिंसडा को तमे किंदी मैनेज करि परिबो कि किछि भूल भाल जदि अछि तो पूराटा किंदी चेंज करि परिबो. All these things comes under the analytical and critical review. Okay, what type of information can auditing encompass? Financial and non-financial information. Financial da पड़ा आछे हमरो primary रे, non-financial da पड़ा आछे हमरो broader perspective रे. Okay, सेडा गुटे मन रखु दबो. Essential in the auditing process to evaluate information systematically. Systematically अछि ना नै तमे किमति जानिबो ऑर्डर रे अछि ना नै कहि केमति जानिबो टेक्नोलॉजी यूज करी जानि परियो कि नै सेटा खाली फॉर्मेट चेक करिवो ऑर्डर चेक करिवोनी इंडिपेंडेंट ऑडिटर थिले कोन हला से माने ठीक से काम न करले मल्टीपल ऑडिटर्स थिले कोन हला तांकर काम तो ठीक रहर अछि ना तो तमे जदी देखिबो किछि स्टैंडर्ड्स फॉलो करछि किबा किछि प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया फॉलो करछि then only you can say that the auditing process has been conducted very systematically. तापरे what is the key requirement for an auditor to perform auditing कोन हला key requirement कोन competence independence and prescribed qualification माने से कोची गुटे ऑडिटर हेबा पई गुटे ऑडिटर हेगी ऑडिटिंग करिया पई कोन कोन दरकार को जिंसडा बेसी दरकार मार्केटिंग सर्टिफिकेशन रे से कोन करियो किछि नै ठीक ठीक आंबो बिकियो वाओ नहीं कौन आले बिक पारे स्ट्रांग इंटरपर्सनल स्किल्स सर्टिफिकेशन इन मार्केटिंग एक्सटेंसिव लीगल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं तो कॉम्पिटेंस इंडिपेंडेंस एंड प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस ठीक अछि what is the ultimate aim of auditing in relation to financial statements ultimate aim कौन financial statements को धरी रे true and fair view से दबो प्रॉफिट एंड लॉस केमती अछि बिजनेस रो स्टेट ऑफ अफेयर्स केमती अछि से सब जिंस ओके अकॉर्डिंग टू IASB व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट IASB वाओ से तो सब जगह okay तापरे what does auditing involve besides verifying accounting data according to expanded scope auditing involve besides verifying accounting data according to the expanded scope एडा देखो टिके एथरे सबने समस्त कोन कर दियंती सीडा कर दियंती बुझिला ना नहीं तो सीए कहूची अकाउंटिंग डाटा वेरीफाई करला परे से आ कोन देखिबो ना सेकंड जिंस जोडा देखिबो सेडा होचे हमरा लीगल रिक्वायरमेंट फर्स्ट डा कोन थिला हमरा फाइनेंशियल डाटा तापर देखिबो नॉन फाइनेंशियल डाटा एति की हेला परे एटा तो रहिला हमरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रे प्राइमरी एंड ब्रॉडर रे तापर से कहूची एक्सपेंडेड स्कोप अंडर आछे हमरा कोन लीगल रिक्वायरमेंट ठीक अछि तो देखिबो ऑडिट ना मन रखिया अछि which aspect is emphasized in the definition by Aarons, Elder and Beasley
सब एग्जाम क्वेश्चन जाबो डायरेक्ट को डेफिनेशन ए डेफिनेशन रे से माने को जिंसडा को बेसी एम्फसाइज करचंदी किंबा बेसी फोकस देइचंदी ना एक्युमुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस आमे गोटे पॉइंट रे ऑलरेडी देखिथिलो ऑडिट मींस इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस माने एविडेंस कलेक्ट करियर इवैल्यूएट करियर तो एक्युमुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस व्हाट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑडिटर्स मेंटल एटीट्यूड माने आमे रिक्वायरमेंट्स रे देखिलु कि ताको पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन रहा दरकार हला से पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करिया दरकार से सब जिंस बट से कोची मेंटल रिक्वायरमेंट किबा मेंटल एटीट्यूड कोन रहिबार अछि हला तो सेडा कोन होचे हमरो इंडिपेंडेंस एंड कॉम्पिटेंस माने ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कैरी आउट द ऑडिट एंड ही मस्ट आल्सो बी इंडिपेंडेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच ही इज फंक्शनिंग बुझि पाला व्हाट इज द प्राइमरी रूट ऑफ ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट प्राइमरी रूट एटा सब भूल करी आछन ऑब्वियसली लॉजिकली लागुनी से जो बड़ बड़ जिंस सेडी दिया है के प्रिंसिपल्स मारिबो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखि पारिबो देखो ऑडिटिंग पई से कोची को प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड्स सा माने तमे ओरिजिन कोड रो होची कोड रो स्टार्ट होची तो लोकाने कोन देखिबे कहिए कि प्रिंसिपल्स की स्टैंडर्ड्स की जहां भी केले लॉजिकली भाबियो कि से कोची प्राइमरी रूट ऑफ ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स माने सी कोची ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स तम पाखरे अछि बट तमरा निजर गुटे लॉजिक नथे कि तमे कोन इंप्लीमेंट करि परिबो कि ऑब्वियसली नहीं हला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोन देखो एडी डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड फ्रॉड तापर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग कोन कोइछि से देखो मु फर्स्ट क्वेश्चन रे कहितली ध्यान दियो मु जल्दी जल्दी पढौची प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग नहीं कौन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हु इज प्राइमरली अकाउंटेबल टू ओनर्स और शेयर होल्डर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग इंडिपेंडेंट ऑडिटर हला ओनर और शेयर होल्डर मानू के दाई इंडिपेंडेंट ऑडिटर व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग ट्रू एंड फेयर व्यूज अकाउंटिंग रो कौन थिला प्रिपरेशन एडी थिला ट्रू एंड फेयर व्यूज इन टर्म्स ऑफ अप्रोच हाउ डज एन इन्वेस्टिगेटर डिफर फ्रॉम एन ऑडिटर एडा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे इन्वेस्टिगेटर को और गोटे ऑडिटर को मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस कौन कौन चारटा जा लागू सेति पे कहली इन्वेस्टिगेटर स्टार्ट विथ स्केप्टिसिज्म माने कौन दे ऑलरेडी नो दैट समथिंग इज fraudulent here बुझी पाले ना नहीं बट ऑडिटर स्टार्ट्स विथ ट्रस्ट नहीं माने से प्री ऑक्युपाइड की ए जिंस गुडा को से ठीक करछि बाकी कोन भूल अछि देखिबो बट इन्वेस्टिगेटर को जिंस रे स्टार्ट करबो ना ही नोस दैट दिस थिंग इज फ्रॉड दिस थिंग इज फ्रॉडुलेंट किछ ना किछ भूल अछि आ से भूल द से आउर टिके डिटेक्ट करिया पे बाहर करबो सो दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेटर एंड ऑडिटर what primarily determines the scope of an audit of financial statements scope of an audit relevant legislation and professional pronouncements हला पढिबा को पढिबो माने तमन गुड थोड़े देखि दबो त आंसर आराम से करि पारि बट एजा देखिबोनी तो केबेले करि परियो what is the auditor's principal concern when assessing the scope of an audit principal concern कोन तमने गोटे काम करि पारियो म जतलो पढो छि टिके लिखि दे पारियो गोटे गोटे लाइन रे त टिके बेनिफिट होबो एते जा देखियाडो भल रे गोटे लाइन लिखि दबो आराम से हे थांदा what is the auditor's principal concern when assessing the scope of an audit principal concern कोन माने प्राइमरीली तार कंसर्न कोन evaluating the authenticity देखो सब जगह तुमको लागुची एबे तमे जहा स्टेटमेंट लिखिबो नोटबुक रे कोन प्रिंसिपल कंसर्न इज इक्वल टू evaluating the authenticity of transaction तो तुमको पूरा क्वेश्चन दा अगेन पढिबा को पडिबो कामडा केंदी इजी करियर अछि सेटा देखियो ना what is the primary principle that ensures an auditor's impartiality and freedom from influence during an audit primary principle that ensures an auditor's impartiality and freedom from influence during an audit कौन ना independence क्वेश्चन टा देखो कौन बुझा पड़छ एथि को मते प्राइमरी प्रिंसिपल्स जोड़ा कि ऑडिटर
impartiality and freedom माने गोटे ऑडिट करला बेलको से किन impartial रहउची किन freedom रहउची से जिनसडा बुझेबार टर्म कोन हेडी ना इट इज इंडिपेंडेंस हला लेखिबो गोटे गोटे लाइन लिखि दो बोले देख नहीं तमे देखिबो वाली कहले मु ये करछ कोन लिखे रछ कोन नाइ मो सिमती नै माने कोन ए भितर कोन देखियार अछि कोन आली कहि मु रिवाइज करूछ देखो इमती लिखि पारियो प्राइमरी पर्पस रे ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग करबो सेथरे माने ऑब्वियसली वीडियोटा तो रिलीज हबो एपर तुम स्टार्ट कर दियो से रिमेनिंग टा आगरे लिखि दब पेज छाडी के रखि देले हे जे ओके माने को इवेंट टा रिप्लेस करला नारो पर्सपेक्टिव रे कोन आछि प्राइमरी फोकस कोन होछि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रे कोन होछि बिट क्वेश्चंस पे अलगा नोट्स थाउछ देखो सेम ऑडिट टा तुमको थ्योरेटिकल पे अलगा पडिबो केस लॉ पे अलगा पडिबो बिट क्वेश्चंस पे अलगा पडिबो तमे जेते लेखि की प्रैक्टिस करबो सेते तमर अटेंशन टा रहइबो खाली सुने वाले सरला कथा brain active rahibon which principle emphasizes the need for maintaining proper records and to demonstrate adherence to audit principles se kuch dekho which principle emphasizes the need for maintaining proper records to demonstrate adherence to audit principles koda documentation to se kon kuch dekho four word tedi match kuch maintaining proper records to maintaining proper records mane kono documentation okay maintaining proper records mane documentation okay. What is the primary objective of auditing according to SA 200 देखो SA 200 रा हमर दीटा पॉइंट्स आसिला SA 200 रे फर्स्ट क्वेश्चन कोन आस्तिला हमर फीचर्स कोन नै SA 200 कोन बुझौ छी ले पूरी एप्लीकेबल नै कोन बुझौ छी कोन हां SA 200 कोन बुझौ छी এটা তো IASB हाँ essential features किंबा कौन बुझुछ ना examination of entities financial information तो मु सेडा एड रखथिली SA 200 रिलेटेड कौन कौन आसीबो गुड जगह रे पढबो ताकि डबल जा भी कमेबो सेड ओके the primary objective कौन determine whether a financial statement presented true and fair view which of the following is a secondary objective of auditing primary objective is true and fair view secondary objective is detecting fraud and errors in financial records which is one of the primary reasons for appointing an independent auditor to investigate financial reports कोडा होचे हमर most primary reason लिखनो primary reasons for appointing an independent auditor to investigate financial reports independent auditor का आउट भी क्वेश्चन देखिथिला हमें कौन थिला सेडा इंडिपेंडेंट ऑडिटर रो से का को कोन अकाउंटेबल का अकाउंटेबल कहली मु स्टेक होल्डर्स आउ ओनर्स आउ गोटे पॉइंट होची तार प्राइमरी रीजन किबा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोन ना एड्रेस द credibility issues with the reports address the credibility issues with the reports okay from an internal control point of view, what is one of the benefits of regular auditing? Internal control point of view, what is one of the benefits of regular auditing? Benefits se coach. Purpose nahi. There is a clear-cut difference between benefits and purpose. Acting as a moral check on employees. First number ta se kaun dechi CR janni. Hala. Sujarale akiyode info. What is one of the advantages of audit in protecting stakeholders? देखो डायरेक्ट आंसर टा स्टेक होल्डर माने इंटरेस्ट जहाँ भी प्रोटेक्ट करिवर ओके
Why does an audit serve as a deterrent against fraud and embezzlement? एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा लेख आईडी केमती लिखिबो ऑडिट acts as a watchdog deterrent माने होची watchdog against fraud केमती लिखि दबो काहे कि because it promotes vigilance among employees तो लिखिबो जतळ को संगे संगे त मन को मन रहि जइबो यू कैन ट्राई इट सतरे मन रहि जइबो आ गुस्तर हां वॉचडॉग अगेंस्ट फ्रॉड घंटा कुकुर नहीं जो बाहर जगी था होची हां घंटा कुकुर वॉचडॉग घंटा कुकुर अध घंटा कुकुर हाफ एन आवर डॉग सेम पानी primary responsibility of management in the audit process कौन preparing financial statements. What is professional skepticism in auditing? Professional skepticism माने कौन? Professional skepticism माने कौन? Professional skepticism माने ऑडिट रे डाउट करियर बट सेथरे आसी हमर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैला तो एडी खाली लिखि दियो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ठीक अछि व्हाट डज द टर्म मटेरियलिटी मीन इन ऑडिटिंग अच्छा लिखो चला कौन हैला पीयूष चार्ज्ड तो लिख दिया मटेरियलिटी ए नेक्स्ट क्वेश्चन मटेरियलिटी इज इक्वल टू importance of an economic decision importance of an economic decisions importance of an economic decisions decision तापरे what characterizes a statutory audit रा meaning आगा होचे mandated by law statutory word जदि पढ़ा आसीची ताकर meaning होची किछि न किछि law related mandated by law statutory audit is equal to mandated by law okay who appoints the statutory auditor के appoint करची shareholders primary objective कोन statutory audit लिखि दबो ता अंडर फर्स्ट लिखबो mandated by law ता पर लिखबो के अपॉइंट करची statutory auditor लिखनो हां के अपॉइंट करची statutory auditor को शेयर होल्डर्स ता पर statutory auditor रो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होची enhances the credibility of financial statements तो 4 एमसीक्यू क्वेश्चन सेडिया का कवर हियाला तमे प्लेस छाडी थिबो सेति पई जतळ को तमे statutory audit पढथिबो जदि तमन को लागी आ किछि एले क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट रे आसी परिबो तो यू कैन जस्ट jot down the points in the remaining place. Okay. In object-wise classification, audits are categorized based on objectives, obviously. Hala. What type of audit is focused on assessing the effectiveness of internal control? Internal audit nahi, seta sab boda operational audit hobo. इफेक्टिवनेस से कहूच देई दबो मात्र एडी से देई निसे ना से पक्का दबो हां देखो इंटरनल कंट्रोल देखि कि इंटरनल ऑडिट लिखि दबो एडी रीजन कोन देखो मार्केट वेरी इंपोर्टेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम माने असेसिंग टू टाइप्स हे परिबो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम माने एक्चुअली कोन अछि के अछंदी केतरा इंटरनल ऑडिटर अछंदी से जा सब हमें देखुछु कोडा रे
इंटरनल ऑडिट रे बट ए ऑडिट सिस्टम डा केते भल से काम करछे हमकु किन जाना पड़िबो हमर डे टू डे एक्टिविटीज रो ऑडिट करिगी ना जदि डे टू डे एक्टिविटीज रे ध्यान से सुनो कोन कहूची डे टू डे एक्टिविटीज रे एम्प्लॉय माने लेट आछंदी एम्प्लॉयज माने कोन करछंदी फ्रॉडुलेंट करछंदी मन इच्छा एरर्स करछंदी किछि ले केयर न उनांदी तो सेडा कोन माने इंप्लाई करछि ना ऑडिट सिस्टम डा इंटरनल ऑडिट सिस्टम डा एते स्ट्रांग नाही कहि ओके तो एडी लेखो assessing the effectiveness of internal control रो जदि effectiveness से बुझोची किंबा analysis करूची तो this is operational audit तो ए दीडा पॉइंट भल से मन रखितबो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जदि देखुची दैट इज इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल माने से केते दूर केते भल से काम करछ सेटा जदि जानि पार अछि देन से ऑपरेशनल ऑडिट करिवो व्हाट कैरेक्टराइजेस अ नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट सेडिया स्टैट्यूटरी ऑडिट तळ लेखि दबो वॉलंटरी इंटरनल रूल्स और एग्रीमेंट्स नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट माने नॉट मैंडेटेड बाय लॉ जदि लॉ मैंडेट करनी तो निज इच्छा रे से करिवो वॉलंटरी और इंटरनल रूल्स और agreements okay tapre why do sole proprietors choose to undergo auditing voluntarily to settle partnership accounts तो एडा गुडी बेसिक इंफॉर्मेशन माने voluntarily ताके कोन करिया पे चाहछन what is one of the advantages of auditing for partnership firms पार्टनरशिप फर्म्स जदि ऑडिटिंग करो चंदे ता तांकर बेनिफिट कोन हबो ना तांको लोन अप्रूव जल्दी हबो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रो काहेंगी पार्टनरशिप फर्म वाली कहले इंडिपेंडेंट एसोसिएशन सेडा के का पूरा बॉस नै के तांकर अथॉरिटी नै जदि से माने ऑडिट करो चंदे तो ऑडिट माने कोन ऑडिट रिपोर्ट रे सब जगह ठीक होची खइगी से दबो तो ता हिसाब रे कोन मिले ताको ना तार लोन अप्रूवल प्रोसीजर ता जहां भी अछि दैट विल बी कैरिड आउट वेरी स्मूथली एंड देयर विल बी अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दे गेटिंग द लोन्स तापरे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट एडा लिखि पारिबो पार्टनरशिप फर्म रो ऑडिट एडवांटेज ता कोन ना लोन अप्रूवल फैसिलिटेट्स लोन अप्रूवल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट कहिथिली ऑलरेडी ना से ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस ता ठीक करिवो अश्योरेंस करिवो ओके when is the final audit typically conducted now after the book of accounts have been closed for the year okay close hela pore habo primary purpose of an interim audit ता mid of the year रे हे पारिबो जतोळे भी हे पारिबो हला माने ईयर भितरे फाइनल ऑडिट आगे जो भी ऑडिट होची सब जगह इंटरिम ऑडिट्स तो तार पर्पस कोन रोची जदी मनर किछि एरर ऑफ फ्रॉड हेबर चांस अछि तो अर्ली स्टेजेस रे डिटेक्ट हबो तो तमे लिखि दे पारिबो इंटरिम ऑडिट पर्पस to detect interim audit माने any audit in the mid of a year मझरे जहां भी ऑडिट होची that is interim audit okay तापरे तार पर्पस होची डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स इन अर्ली स्टेज तापरे प्राइमरी फोकस ऑफ कंटीन्यूअस ऑडिट रो प्राइमरी फोकस कोन ongoing audit testing of 100% of transactions obviously ongoing audit तमे continuous audit को ongoing audit को मैच करिया ले कहले आंसर ता आराम से जान दबो ओके why is technology important in continuous auditing एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दा continuous audit माने ongoing audit रे सेति के लिखि दबो हला ongoing audit हेले when is typically continuous audit conducted ना during irregular intervals देखो कंटिन्यूअसली जदी ऑडिट करियर प्रोसेस होची डेली थोड़ी से चेक करबो ताकू जतण को लागिला ठीक मनर 1 वीक से चेक करि परबो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन जदी एते अधिक ट्रांजैक्शंस होनी कंपनी भितरे तो से 2 मास को 3 मास को थरे चेक करबो बट कंटिन्यूअस ऑडिट माने ऑनगोइंग ऑडिट बट एडार मेन पर्पस कोन टेक्नोलॉजी कोन पे इंपोर्टेंट ना ऑटोमेटेड कंट्रोल एंड रिस्क असेसमेंट देखो कंटिन्यूअस ऑडिट माने ऑल्टर को हमें डेली बेसिस रे डाकी परिबानी तो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी
तो टेक्नोलॉजी कौन पे इंपोर्टेंट है होची कंटीन्यूअस ऑडिट रे ना इट एनेबल्स ऑटोमेटेड कंट्रोल माने कोन तमे किछि गोटे सिस्टम रखि देथिबो प्री डिटरमाइंड ताकू चेक करिकि से ऑटोमेटिकली तुमको कहि देबो किछि भूल भाल हेले फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग होची रिस्क असेसमेंट जदि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हमें रखुछु तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पळेला रिस्क ऑफ एरर्स पळेला ह्यूमन बीइंग्स रो इंटरफियरेंस रहिलानी जा लगी कि हमर कोन होबो ऑडिट प्रोसेस ता स्मूथली एंड इफेक्टिवली कैरी आउट होबो ठीक अछि टिके इंपोर्टेंट है एटा सेते पे व्हाट इज वन ऑफ द एडवांटेज ना कंटीन्यूअस गाइडेंस मिलिबो एटा तमे लिखि परिबो पोटेंशियल ड्रॉबैक एटा लेखो इट मे कॉज इनकन्वीनियंस ड्यूरिंग विजिट्स जदि टेक्नोलॉजी रो हेल्प न थाई गिरी से जदि नॉर्मली करूची तो पोटेंशियल ड्रॉबैक कोन होबो इट मे कॉज इनकन्वीनियंस ड्यूरिंग विजिट्स it may cause inconvenience during visits तापरे what characterizes a complete audit माने extensive scope complete audit is equal to extensive scope one word or one line जो कहउछन हला हाइलाइट करिकि रखिथिबो पक्का क्वेश्चंस आसीबो एथिरो एडा होची ऑडिटर स्कोप रेस्ट्रिक्टेड बाय द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एडा होची पार्शियल ऑडिट माने कोन ना तुमको कुहाबो कि आमे एतिका जिंस प्रोवाइड करिवो तुमको जहा ऑडिट करिवो छी यू हैव टू ऑडिट विद इन दिस स्कोप जनरली जो यंग ऑडिटर्स हे थाउजेंड से माने गुआगा इंडिया रे जिंस फेस करिया पड़छ तांकाने जो रिसोर्सेस देबे से रिसोर्सेस रो ऑडिट करिया पड़छ तो the auditor scope is restricted by their terms of engagement so this is partial audit बुझि पालो एडा कोन कहउछ हमें partial audit okay then what does a detailed audit involve detailed audit रे कोन होची examining transactions from the record to their impact detailed audit रे is equal to रे कर लिखो कि examining transactions from recording to impact on financial statements examining to recording to impact on financial statements से extensive scope जोडी लिखि छ सेडी एडा मध्ये लिखि दियो कि इट्स रेयरली कंडक्टेड इन प्रैक्टिस हला एडा होची रीजन सेडा बहुत रेयरली कंडक्ट हुए जेतो द्वारा extensive scope which type of audit is not bound by statutory requirements very important question जोड़ा को एमिति ऑडिट अछि जोड़ा कि स्टैट्यूटरीली से मैंडेटरी करनी स्टैट्यूटरीली से मैंडेटरी करनी सेटा हो जे हम कोन पार्शियल ऑडिट ओके कॉस्ट ऑडिट रो प्राइमरी फोकस कोडी रहउची ना वेरीफाइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन management audit is equal to reviewing the management processes management रो प्रोसेस गुडा को से कोन करबो रिव्यू करबो तापरे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स ऑडिट taxable profit accuracy objective of tax audit कोन verify the taxable profit accuracy माने से जान जानी के प्रॉफिट कम कर देछि कि कोन करछि जेमति कि हमर पीजीपीपी अछि से पीजीपीपी से कोन चेक करबो एक्सपेंसेस कोडा से अलाउ करछि इनकम कोडा से अलाउ करछि से देखिबो जदि से जिंस जगह नै तो से जान जानी कोन करछि कोन ना कोन गुटे ये करी कि से प्रॉफिट कमे देछि ताकि ताको टैक्स कम देबा पड़छि तो टैक्स ऑडिटर से कोन देखंदी ना टैक्सेबल प्रॉफिट रो accuracy देखंदी social audits are typically undertaken voluntarily by business houses हला social audits undertaken voluntarily माने ताका निज इच्छा रे करू चंदी social audit रे कोन थिला ऑब्जेक्टिव ता से सब मध्ये तुम पाखर लिखि पारिबो ने सोसाइटी रे दे हैव टू क्रिएट अ गुडविल से जिंस पे ताके ऑडिट करू चंदी तापरे proprietary audit aims to asset safeguarding माने निजर गोटे ओनर जति अछि तार ओनर केति की एसेट्स पोजेस करि के रखिछि से एसेट्स रो केति की सेफ गार्ड हे गिरी अछि माने केति की सेफ अछि केति की रिलायबल अछि ना से खालखाल रे रिवैल्यूएशन करि के देखै दोछि कोन सतरे अछि ना नै से सब जिंस से कोडा रे देखिबो proprietary audit तो proprietary audit is equal to asset safeguarding
हैला एम इज इक्वल टू एसेट सेफगार्डिंग फोरेंसिक ऑडिट रो ऑब्जेक्टिव कोन डिस्क्रिपेंसीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ए वर्ड इंपोर्टेंट डिस्क्रिपेंसीज माने possible errors and frauds possible errors and frauds tapre which audit focuses on holding government entities accountable for their operation performance audit hela government entities तांको निज निजर जहाँ भी माने काम अच्छी गवर्नमेंट को किए पचारि परियोनी भाभी थाउचंदी बट गवर्नमेंट एंटिटीज को भी को पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडिट क्वेश्चन करि परिबो को पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडिट क्वेश्चन करि परिबो ना परफॉर्मेंस ऑडिट ओके in which country is secretarial audit gaining recognition due to complex corporate law कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट लॉ लगी को पर्टिकुलर कंट्री रे सेक्रेटेरियल ऑडिट रिकॉग्निशन गेन करूची ओके कंफ्यूज होबनी से एमती पर्टिकुलरली देछि माने को गुडे कंट्री थियो पुरा आले भाबियन हैला एडा भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैला काहेकि पिलाने के जानना गवर्नमेंट एंटिटीज को जदी अकाउंटेबल आमे करे अछि तो को ऑडिटर आमे करे परिया परफॉर्मेंस ऑडिटर करे परिया सेमान तो भाबुचन तांको केबे के पचारि परियन कोइ जति गुडे परफॉर्मेंस ऑडिट हेई जेछि तो के आले तांको क्वेश्चन करि पारिबो ओके मेन पर्पस ऑफ एचआर ऑडिट एचआर इफेक्टिवनेस देखिबो माने गुडे एचआर केते भलो काम करछि लोकानक सहित केमति बिहेव करछि एम्प्लॉई सहित केमति बिहेव करछि से सब जिंस ओके Information systems audit primarily evaluates the information system audit कौन evaluate करूची computer based system डा केमती अछि संकर सॉफ्टवेयर केतिकी रिलायबल अछि हैला केतिकी सेफ अछि से सॉफ्टवेयर यूज करियर से सब जिंस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रे प्राइमरी पर्पस कोन गाइडलाइंस दबो आ क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क इंप्रूव करबो एडा लेख टिके प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स टू अच्छी गोटे होची गाइडलाइंस फॉर ऑडिटर्स तापरे improving ऑडिट क्वालिटी वर्क improving ऑडिट क्वालिटी वर्क okay Which organization was established in 1977 to promote harmony in the global profession of accountancy? Harmony in global profession of accountancy. International Federation of Accountants. से कहूची accountancy profession डा पूरा world wide रे गुट्टाग प्रकार रे हेबा पई को organization establish हेची ना International Federation of Accountants. Very important question. Okay. लिखिला primary objective of International Auditing and Assurance Board na public interest by developing and issue high quality auditing standards तो एटा कौन करबे तार ऑब्जेक्टिव होची issues high quality auditing standards plus preserves public interest okay main function of auditing and assurance standard board देखो कंफ्यूज होबनी एथे कोन होची प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पचारला इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सेम क्वेश्चंस अछि टिके देखो एडी पचारची ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड रो मेन फंक्शन कोन टू रिव्यू एंड डेवलप ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड मेन फंक्शन डेटा एएसपी रो लिखि लगा तो मन रयो आ तळ तळ लिखियर अछि आईएएसबी रो कोन एएसबी रो कोन तळु न लिखले तमे कंफ्यूज हे जिवो
What kind of guidance does the Auditing and Assurance Standard Board provide? को guidance से provide करूँच. Guidance notes on auditing issues and technical guides for professional accountants. को particular जिनसे ना auditing issues, auditing रो problems कौन सेड़ा उपरे और technical guides for professional accountants. मैंने technically जदि किसी problem होच तंको हो, हैला calculation problem होच कि technical guidance दरकार पड़ची professional accountants को जे नुआ नुआरा आसी चंदी से मानंगो से कौन करिवो guidance notes दबो माने working note type किसी provide करिवो. Purpose of revised preface titled Preface to the Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Surface. Now, understanding the ASB pronouncement. Hala. माने ए particular title under ए कौन आसुची ना ASB रे जहाँ भी rules and regulations से देची ना सेडर detailed analysis and understanding the those. Okay. Which category of AASB standards include standards on auditing? Which category of AASB standards include standards on auditing? It's engagement standards. Engagement standards. बहुत important questions. AASB हमको बहुत प्रकार standards prescribe करूँच. But say under रे को particular जिनसे रे हमको auditing standards include है गिरी अच्छी ना engagement standards ने include है गिरी अच्छी. When did the revised preface came into effect? जो एडा April 1, 2008. April 1, 2008. April 1 टा तो सब जगह रहता है but ये जा देखिए. What are the statements on auditing primarily aimed at achieving? Obviously compliance on critical matters. जदि किसी टाइप problem हो ची तो से कौन करिबो? Compliance factor टा ऊपर ध्यान दबो. Guidance notes. When are guidance notes issued by ASB? किछिले स्टैंडर्ड्स जदि इंप्लीमेंट करिवार अछि से टाइम रे से कोन करिवो गाइडेंस नोट्स गुडा को दबो बुझि पालो. Who formulates auditing standards in India? Important question. Auditing standards के दोची को एंटिटी? Auditing and Assurance Standard Board. Auditing and Assurance Standard Board. What is the role of study groups or task forces in the formulation of auditing standards? What is the role of study groups or task forces in the formulation of auditing standards? तांकर main purpose कौन था उची? ना to provide comments on exposure drafts. बुझी पाला ना नहीं? मन रखियो पड़िया जा सबो. स्टडी ग्रुप्स और टास्क फोर्सेस माने तांकर काम आगा होची लोकानंगो को जिनसरे प्रॉब्लम होची कहिगिरी से जारा गुटे ड्राफ्ट रिपोर्ट बनेबे. ड्राफ्ट रिपोर्ट बनेगिरी जदि किछि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आछिरे माने गुट्टा का जिंस करिया पई तीन चारटा गाइडलाइंस आछि तीन चारटा मेथड अछि तो समस्त कंफ्यूज हे जे को मेथड यूज करियर अछि तो से कोन करबो ना कोडा गुट्टे पर्टिकुलर जिंस को कमेंट करबो से जिंस को धरि कि समस्त सेडा फॉलो करिवे. तो एमती जिंस एड्रेस करिया पई वी हैव द स्टडी ग्रुप्स और task forces. मुझे पाला. What's the purpose of issuing an exposure draft of proposed auditing statements of standards? To seek comments from the institute members. Institute member मानंगरु comments issue करिया पे comments आनी बे. माने देखो मो जो कहउथली exposure draft रो मीनिंग द बुझेली तो से जिंस डगो आमे कहि देले हबो एडा सुंदर लाउछ एडा इजीली हे जे हम एडा कर दो कहि हबो कि नहीं से जिंस कहिला पारे इंस्टीट्यूट रो हमको अप्रूवल आनिबा को पड़िबो. से जो ड्राफ्ट अछि ताको हम कहू एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स खाली नाडा कॉम्प्लिकेटेड जिंस किछ नै. ड्राफ्ट ले कहले कोन हम गोटे रैंडमली किछ गोटे स्क्रिबल करले ताको हम कहू ड्राफ्ट कहिगिरी तो से जिंसडा को हम कार माने कमेंट्स आनिबा ना इंस्टीट्यूट रो मेंबर मानंगरो वी विल सीक सम कमेंट्स. ठीक अछि. हु हैज द अथॉरिटी टू इश्यू स्टैंडर्ड्स और स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग? The Council of Institute of Chartered Accountants of India. तापरे what is SA 210 recommend regarding auditing engagement terms? 210 को जिनसो को recommend करूछ. Engagement terms should be recorded in an engagement letter or written agreement. Engagement terms should be recorded in an engagement letter or written agreement. SA 210 सेटा प्रिस्क्राइब करूछ.
Which of the following is not a typical content of audit engagement letter? Auditor's favorite color. The odd one out type of. When is it not necessary for auditors to record engagement terms in a written agreement? तांको गोटे जिनस रेकॉर्ड करियार कि माने कहियार केबे मैंडेटरी नै ना जेतळ कहि दउछि ल कि तुमको दरकार नै कहिग्री भोजरे से आइटम ता तमे केतळ खाइयन रे जेतळ से दबोनी ना तो खाइया आगा नथिले. What is an audit program? Audit program is equal to checklist for auditors. से आगर जगह टिके जो इंपोर्टेंट मार्क करछि सब जगह लिखिबो के फॉर्मुलेट करछि कोन करछि तापरे ए जो प्रीफेस गुडा को प्रीफेस केबे आसिले एबे कहितली डेट ता कोन अछि को वेरी गुड. According to SA 300 what is the purpose of audit program? तो SA 300 रे हमर ऑडिट प्रोग्राम आछे हमें जानछु तो SA 300 पाखरे लिखि दबो तार पर्पस होची ऑडिट प्रोसीजर्स और टाइमिंग स्पेसिफाई करियर. Audit procedures of timing specify करियर. What is one advantage of using an audit program? One advantage कौन तमे ऑलरेडी एडी लिखिचो कहले एडा मध्ये आंसर करि परबो. Serves as a ready checklist of audit procedure. In which situation might drawing up an audit program be unnecessary? Small concern तमे randomly जाई कि चेक करबो सब जिंस करबो तो ता पे गुटे audit program बनेडा आगा गुटे waste of time. What risk is associated with rigid audit programs? Very important question. Risk associated with rigid audit programs माने से कहूची कि जदि strict audit programs अछि रे माने मन इच्छा से करि परिबनी ताको कोन ए जिंस पर एडा करियर अछि ए जिंस पर एडा करियर अछि तो सेटा रेलेवेंट भी नाही फिर भी ताको कहूची कि तुम स्ट्रिक्टली ए आगा प्रोसीजर फॉलो करिवो तो ता लगी कोन हो लॉस ऑफ ऑडिटर इनिशिएटर माने ऑडिटर रो फोकस डाइवर्ट हे होची तो ऑडिटर कैन नॉट particularly concentrate on the thing तो तारा conclusions और analysis मध्ये एपट सेपट हे जबना नाही so that's why this is the risk associated with rigid audit programs. ठीक अछि. In addition to the Banking Regulation Act 1949 what influences auditing in India's banking sector? banking sector जदि पळा आसुची और RBI तितरे अछि तो आ को जिंस भाबिया रहले तो मो दरकार नै हैला. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से कहि देला जदि आरबीआई न थांदा तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट गुड जिंस मन रखो बैंक्स को जेतळगो आसुची तो ता अंडर फर्स्ट आसीबो बीआरए बैंक विथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 तापरे आरबीआई 1934 आरबीआई एक्ट 1934 एटा टिके मन रखिबो हैला बिकॉज़ बोथ थरे अमेंड हेची. Why is a one size fits all audit approach not suitable? माने कोन जानछना समस्त पे गुट्टा ऑडिट प्रोग्राम कोन पे सुटेबल नाही हले से कोच इट इग्नोर्स द यूनिकनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. समस्त पे गुट्टा ऑडिट प्रोग्राम के बेले फिट हबन मो सिमतिया होचे समस्त पे गुट्टे स्टडी अप्रोच के बेले फिट हबन बट क्वेश्चन पेपर तो समस्त पे गुट्टा आछि ना बुझि पाला ना नहीं तो से ऑडिट प्रोग्राम डा तमे ऑडिटर हिसाब रे करे रछ तमे ऑलरेडी एडी देखिलु कि ऑडिटर को जदि हमें बेसी रिजिड प्रोग्राम दबा तो कोन हबो ऑडिटर रो इनिशिएटिव ता लॉस हे जिवो. What's the first step in auditing of an educational institution accounts according to the provided text? ना तार internal control system टाको से कौन करिवो SS करिवो. Okay. Which document should auditor carefully review to ensure compliance with decisions regarding financial matters in educational institution? Decision making देखिए पे को book देखि बसिए ना minute book देखि को हेले institution. What should auditors verify concerning the payment of employees' salaries in educational institution?
Calculation of deposit of provident fund contribution and income tax deducted at source. एटा मध्ये important. से कोची को पर्टिकुलर जिंस देखि कि तमे एम्प्लॉय मानकर सैलरी पेमेंट ता एन्श्योर करि पारिबो माने ठीक अछि ना नै कहि ना केमती कैलकुलेट हेछि केमती डिपॉजिट हेछि प्रोविडेंट फंड को केमती जाइछि से सब जिंस देखि करी आमे कंफर्म हे पारिबो. Why is it essential to verify the financial statements of educational institution? कौन दरकार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेरीफाई करियर कौन दरकार ना टू कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स ता ऊपर जहां भी लीगली किछि इंप्लिकेशंस अछि तो सेडा कंप्लाई करछि ना नै देखिया पे. ओके प्राइमरी पर्पस ऑफ एग्जामिनिंग ट्रस्ट डीड पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हेल्थ केयर ता कोन पे होछि लोकेशन देखिबो पेशेंट फीस देखिबो क्वालिटी देखिबो पिला ने एडा कर दियंदी बट नाइन एडा रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग तार रूल्स एंड रेगुलेशन ता केमिति हेछि कोन हेछि सेडा देखिया पे किंबा जदि बी एंड डी बोथ ऑफ दे अबाउट देछि तो से ऑप्शन मध्ये हेइ पारिबो बट फर्स्ट प्रेफरेंस ता ताकू आगे दियाबो. ओके 110 जई करिबा टिके देखो. Which step involves evaluating the internal control system associated with the asset management and transaction authorization and healthcare organization auditing. So, केते जिंसो कहिछि but evaluating internal control system. कहिछि मु evaluating the internal control system माने internal audit. Effectiveness of internal control system माने operational audit. बुझि पाला. Primary purpose of reviewing minutes of meetings such as the board of directors and management committee in healthcare organization. कहिछि मु सेम क्वेश्चन सेम आंसर देखो एडी मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग तो सेम आंसर एडी मत. लास्ट देखो लास्ट फॉर टुडे. Which document should auditors vouch to verify the grants received by government run hospitals? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माने गवर्नमेंट ग्रांट्स जहां भी अछि गवर्नमेंट ग्रांट्स माने गवर्नमेंट्स को बाहर किछि डोनेशंस मिलथिबो तो से डोनेशंस लीगल पर्पस पे मिलछि लीगल पर्पस पे यूज हेछि लीगल अथॉरिटी रो आछि ना नै ए तीनटा जिंस गोटे पर्टिकुलर ऑडिटर चेक करबो तो सेडा को जिंस रो जाना पड़िबो ना ओनली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रो जाना पड़िबो. ओके ठीक अछि हां किछि डाउट्स अछि? No? Fine. Thank you so much.